A very good morning to everyone. As you can see from the title of this video that it is not an ordinary video where we discuss the concepts of physics. So basically the motivation for making this video is that I am a jobless person and physics में वैसे भी कोई scope रह नहीं गया है आजकल. So basically I have decided to do something big, and by doing something big I mean that I have decided to become the coach of Neeraj Chopra. As you can see ki nowadays it is basically the topic for discussion ki why Neeraj Chopra is not able to breach his 90-meter mark. So basically this video is dedicated to his coach Klaus Bartolonitz that buddy, basically I am coming after your job, and in this particular video I'm going to basically discuss कि what are the different factors कि जो एथलीट है कि वो जैवलिन जब वो थ्रो करता है तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये पर्टिकुलर चीज़ डिपेंड करती है. तो आई नो कि इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आफ्टर आई अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो लॉट ऑफ हाफ बेक्ड इंजीनियर्स एंड हाफ बेक्ड फिजिसिस्ट विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन माय वीडियो कि अरे आर्यन भाई, ये जो हमने तो पढ़ा था कि रेंज का जो मैक्सिमम फॉर्मूला होता है वो v²/g sin 2 थीटा होता है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी. तो इसमें आप नया क्या बताओगे? सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि ये जो v जिस आप वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो, बेसिकली ये जो नीरज चोपड़ा जी हैं जिस स्पीड पर ये जैवलिन फेंकेंगे, ठीक है, वो वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एथलीट के क्रॉस सेक्शन, डेड लोड कैपेसिटी एंड ऑल दैट. सो बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट straight into the action. Okay, so now you see, if you have any kind of throwing event, we generally throw stones. जब बच्चे होते हैं तो we throw stones at each other, and in the athletes also there are a lot of sports, not only javelin. You have shot put and you have discus throw. Okay, in all these throwing events, the muscular strength of the athlete's hand becomes very important. Okay, it is the most important factor, the muscular strength of athlete's hand, and the quality of this is somewhat similar to the weightlifters. Okay, for the weightlifters, the ability to lift the load, it strongly depends on the cross section of the wrist. As wrist is the basically the weakest point in the arm, the cross section of the wrist becomes very important. Along with that, for the weightlifter, since it is basically a question of common sense that when you lift the load, your feet, it bears all the strong normal reaction that you get. So basically, along with the cross section of the wrist, you also have the surface area of the feet. That becomes a very important factor in case of weightlifters. Now what happens जब ये नीरज चोपड़ा जी जो है अपना javelin throw करते हैं? What happens? In all kind of the throwing processes, you see that this particular hand, ये एक final swing, हमेशा एक final swing में जाता है before the projectile is thrown into the air. जैसे ये नीरज चोपड़ा जी अभी आप देख रहे हो, आई हैव टेकन दिस स्नैपशॉट फ्रॉम हिज वीडियो. सो यू सी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. ओके, इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. तो ये एक फाइनल स्विंग होता है बिफोर एनी एथलीट बेसिकली इसे थ्रो करते हैं इस प्रोजेक्टाइल को. नाउ व्हाट हैपेंस, इस सर्कुलर मोशन की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है जिसमें कि हाथ इंक्लूडेड है और ये जैवलिन इंक्लूडेड है, दिस गोज इनटू द सर्कुलर मोशन. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज इनटू द सर्कुलर मोशन, इट एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड ड्यू टू दिस वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो शोल्डर का जो जॉइंट होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर. सिमिलर, और जैसे ये तो जैवलिन के केस में हो गया. व्हाट हैपेंस टू द वेट लिफ्टर्स, उस सिचुएशन में जो वीकेस्ट जॉइंट होता है, जो कि एक वेट लिफ्टर का जो रिस्ट होता है, जो रिस्ट जॉइंट होता है, इट एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर. एंड ये जो प्रेशर होता है ये डिक्रीज करता है एज यू गो अलोंग द शोल्डर. ठीक है, सो बेसिकली इट इज मैक्सिमम एट द रिस्ट जॉइंट एंड इट डिक्रीजेज एज यू गो अलोंग द शोल्डर. नाउ द एक्सप्रेशन दैट वी हैव फॉर दिस outward centrifugal pressure, it is 1 over AA and integral from 0 to LH AL rho L omega square DL. Now what is this basically? This AL becomes the cross section at length L. Of course, if we are talking about cross section at length L, it means we are measuring this L from the shoulder joint, and this rho of L is basically the mass density at length L.
AA is the cross section at the shoulder joint. Okay, basically at L is equal to 0. At L is equal to 0. Okay, so it is similar to this AL only. The only difference is that AL is the cross section at length L and AA is the cross section at the shoulder joint L is equal to 0. That's why we are measuring this length L from the shoulder joint. And this omega is the angular speed of the arm at any given instant. Okay, so while हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जब इनका हाथ से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एंगुलर स्पीड है आर्म की, वो ये ओमेगा है. और बेसिकली हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक सर्कुलर मोशन नहीं है, इट्स जस्ट द आर्क, one of the arc of the circular motion. So for that small time dt, this omega can be treated as a constant. So now, after doing some of the manipulations, we get this PCF to be equal to 1 over 2 v square mh over LHA, and this v is basically the speed of swing of the projectile that we are interested in. Okay, क्योंकि बाकी एक्सप्रेशन आप देखो, अगर आप रेंज का निकालना है, we are in our final calculations we are going to use that expression only. But the point is to see कि ये जो velocity वाला factor है, in case of athlete ये velocity वाला factor किन किन चीज़ों पे depend करता है. Okay, so we are interested in this V. This mh is basically the mass of the hand, and this LH. Oh yeah, I did not talk about this LH. This LH is basically the length of the hands. Okay, this AL, and you can actually see कि ये expression से यहाँ कैसे आया. It's a function of L. We are integrating over L. So of course you will have a term like LH square by 2, and then after some mathematics you are going to get to this particular expression where PCF, or basically the pressure which is beared by the shoulder joint, is basically 1 by 2 V square mh by LH times AA. I've already discussed about rest of the parameters. Now what happens that at the time of the release, this V can reach high enough to satisfy this particular equation, that your PCF can become WD over 2AW, where this WD is the dead load or the dead weight that I was talking about. Basically if you talk about this dead load, the maximum capacity to lift a dead load, it's constant for a particular category of weight, and this entire quantity is a constant, this WD over 2AW. This AW is basically the rest of the cross section. I can write this WD as a constant mu prime mg over 2AW, and basically both are PCF. So from these two expressions I can basically compute the value of V square, and this V square therefore becomes a constant, another constant, gamma times G times LH, where this LH is of course the length of the hands, and this gamma is this particular constant. And these are little things that affect the velocity, that is the mass of the dead load divided by the mass of the hand, and this basically the cross section of the, I don't know what it is, I think it's, yeah, the cross section of the shoulder joint over the cross section of the wrist. Okay, these are the things that basically define what is this V. Okay, and now if you see, I'm just using our old expression of the range V square by G sin 2 theta I plus R naught. Now what is this V naught? You can see, you can ask that, what is this V naught? So since you can see, जब हम javelin throw कर रहे होते हैं, या जो भी एथलीट वगैरह है जब वो javelin throw कर रहे होते हैं, in sports like javelin, it is allowed कि आप जो javelin है आप भाग कर आ सकते हो. So this is basically the velocity of center of mass of the javelin जब तक वो थ्रो नहीं कर देते हैं. ठीक है, तो जो एथलीट है वो रन करता है, तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द javelin is also has some additional velocity. तो basically to incorporate that velocity we are using this, and this R naught is just a small correction factor कि ये जो हमारा javelin है, क्योंकि बेसिकली जब आप javelin थ्रो करते हो तो it is at the length of the hand, है ना, लेंथ ऑफ द हैंड पर ही R नॉट होता है. तो दिस बेसिकली R नॉट इज अ करेक्शन की ग्राउंड से जो हमारा javelin है वो कितना ऊपर है. ये Vmax का एक्सप्रेशन हमने ऊपर कैलकुलेट कराई हुआ है, ये गामा G by LH, ये बेसिकली, और ये स्मॉल जो फैक्टर अल्फा है, ये फैक्टर अल्फा किस लिए है कि क्या होता है कि जैसा मैंने आपको अभी बोला कि जब हम javelin थ्रो करते हैं तो जो हाइट ऑफ द javelin होता है वो क्या होता है कि हमारे जो आर्म के लेंथ पे होता है, जो हमारी जो बाजू है उसके लेंथ पर होता है. तो ये जो फैक्टर अल्फा है ये क्या करता है कि आपका जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बेसिकली ये जो फैक्टर अल्फा इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द javelin एज वेल एज ऑन द मास ऑफ द javelin.
सो बेसिकली ये अल्फा एक इफेक्टिव मास के रूप में ये काम करता है. ओके, इट इज जस्ट बेसिकली इंक्रीजिंग द इफेक्टिव मास. तो ये सब वैल्यूज जब आप वी मैक्स का आप यहाँ पे रखोगे और जब आप ये रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल एक आर्बिट्री उसके लिए करके दिखाया कि सपोज आई पुट दिस वी नॉट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस अल्फा एफ विच डिपेंड्स ऑन द mass of the javelin as well as on the length of the javelin, and it basically acts as an effective mass. और ये r नॉट की वैल्यू अगर मैं 1.5 मीटर रखूँ तो ये जो मैक्सिमम रेंज आ जाती है इट इज 104 मीटर्स. ओके, और अगर आप गूगल पे चेकआउट करोगे दैट व्हाट इज द मैक्सिमम एवर रेंज की किसी भी जैवलिन ने किसी भी एथलीट ने थ्रो कराओ, तो इट इज 104 मीटर्स. ओके, so this is what I wanted to discuss in this particular video, and yeah, thank you.